So hello students, CUT 2025 aspirants, general aptitude test, GK current affairs, rapid revision series. 3 important news. ATM launched aboard Panchvati Express. Yes, this is an important news. ATM on train. ठीक है. So Indian Railways launched the first ever ATM trial on board a moving train, the Panchvati Express. This is a train name, remember this, from Manmad to Mumbai CSMT in collaboration with Bank of Maharashtra, part of non-fare revenue initiative under NIN FRIS. न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम, एब्रीवेशन भी है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है. नॉन फेयर रेवेन्यू idea scheme. ATM installed in unused space in one of the 22 coaches. Targets senior citizens, women and passengers with emergency cash needs. Generally आजकल because of digital payment one tends to carry less cash, but कभी कभी cash की जरूरत पड़ जाती है, तो for that. Enabled with internet on train for real time transaction processing. If successful, this pilot could be replicated across high-capacity intercity trains to enhance passenger convenience and generate additional revenue for Indian Railways. ठीक है, तो ये है न्यूज़. ATM launched aboard Panchvati Express. This is a train name. Remember this. The second important news for this rapid revision is West Bengal teacher recruitment scam, nationwide agitation. West Bengal School Service Commission, unfortunate news है. Over 26,000 teachers lost jobs after the Calcutta High Court annulled the 2016 West Bengal School Service Commission recruitment due to irregularities. So state governments के schools में definitely अच्छे हालात तो नहीं हैं, because teacher recruitment वैसे ही delayed रहती है, और हो जाए उसमें भी अगर corruption के charges आ जाएं, तो जो government schools हैं, state government schools, उसमें जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका क्या ही फ्यूचर होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्टेट लेवल पे. द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द हाई कोर्ट वर्डिक्ट इन अर्ली अप्रैल 2025 ट्रिगरिंग मास प्रोटेस्ट. सो काफ़ी अनसर्टेनिटी है. 26,000 टीचर्स, उनका फ्यूचर, उनका करियर, प्लस टीचर्स ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएगा क्या, कौन पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा कोई. टीचर्स प्रोटेस्ट प्लान्स, नेशनवाइड आउटरीच. ऑन April 14 around 65 affected teachers began a bus journey to Delhi, conducted leaflet campaigns in Bihar, Jharkhand and UP. So April 16 sit-in at Jantar Mantar, New Delhi. April 18 19 statewide protests across West Bengal districts. April 12 march from Siala to Raj Bhavan, Kolkata. May 1 to 7 relay hunger strike. May 8 indefinite hunger strike if demands unmet. तो उनकी डिमांड्स हैं कि उनको जो टेंटेड हैं टीचर्स, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है उनकी रिक्रूटमेंट पर, उनको आप पनिश करिए. जो बिल्कुल सही तरीके से पढ़ कर आए हैं, तो ये थोड़ा सेग्रेट करके, जो सही तरीके से पढ़कर टेस्ट क्लियर करके दोज वर रिक्रूटेड, उनको वो क्यों उनको पनिश क्यों किया जा रहा है. बिग न्यूज़, demands and government response. Protesters' key demands: separate lists of tainted and undead teachers, reinstatement or reassessment of merit-based appointments, salary assurance and clarification on voluntary service call. तो गवर्नमेंट ने कहा कि वॉलंटरी सर्विस चले जाओ, आप सर्विस करो, बट कैसे करें. अगर हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है हाई कोर्ट के ऑर्डर को, तो कैसे ही ये काम होगा. ठीक है. गवर्नमेंट पोजीशन, सीएम ममता बनर्जी कॉल्ड अपॉन द डिसमिस टीचर्स टू कंटिन्यू वॉलंटरीली टिल अ लीगल रेजोल्यूशन इज रीच्ड. School authorities uncertain whether such teachers can mark attendance or be paid. Question mark है obviously. Education Minister Bratya Basu met representatives on April 11, assured that separate list would be released after CBI consultation. The WBSSC will publish this list by April 21 subject to legal vetting. Protesters stand refuse to back down until the untainted candidates are officially reinstated or cleared. वो कह रहे हैं हमारी क्या गलती है अगर करप्शन हुई है तो. टीचर रिक्रूटमेंट इज अ बिग इशू इन इंडियन स्टेट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स. देख सकते हो, अनफॉर्चुनेट है. झारखंड में हेमंत सोरेन अपॉइंटेड JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेशनल प्रेसिडेंट. So on April 15, Shibu Soren, the party's founder and long-time president, passed the baton to his son Hemant Soren at the 13th Central Convention Ranchi. Shibu Soren will now serve as founder patron of JMM. So Jharkhand Mukti Morcha, right? New national president Hemant Soren.
Hemant Soren led the party to 2 major assembly victories in 2019 and 2024 and sees the move as legacy strengthening and expansion to national politics. This comes shortly after his release from jail following his arrest in a land scam case in January 2024 by the Enforcement Directorate. ठीक है जी. Founded in 1972, Jharkhand Mukti Morcha, founded in 1972, emerged as a strong voice for tribal rights, land, water and forest resources, popularly associated with Shibu Soren, called Dishom Guru for his grassroots activism. BJP spokesperson Pratul Sahadev criticized the appointment as dynastic politics. बीजेपी का चार्ज रहता ही है opposition parties की तरफ कि वो dynastic politics को बढ़ावा देते हैं, alleging it was a family-centered move with no empowerment of grassroots workers. Hemant Soren's statement expressed gratitude and commitment to serving Jharkhand with renewed strength, vowing to live up to the expectations of the people and his father's legacy. So 3 important news है. All the best for your preparation. जल्दी फिर मिलेंगे. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए. God bless you and thank you.